Assalamu alaikum. I hope so you will be fine. In today's lecture we will learn about phrases. What is phrase? Phrase is a group of words. ये एक वर्ड्स का ग्रुप होता है. A phrase is not complete sentence. ये complete sentence नहीं होता, ना ही ये complete meaning देता है. And it does not have both subject and a verb. इसमें subject और verb भी नहीं होता. You know what is subject and what is verb. So subject is doer and verb is an action word. So it does not give complete meaning. Phrase becomes meaningful when it used in a sentence. ये तब ही meaningful हो सकता है जब इसको complete एक sentence में लिखा जाए, एक sentence में add किया जाए, तब ही ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है. क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट तभी मीनिंगफुल होता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो. सो सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें नहीं होता, सो ये कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं देता. अब अगर इसको इन शॉर्ट कहा जाए तो ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनकम्प्लीट मीनिंग होता है. इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस: इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, अंडर द टेबल, आफ्टर स्कूल, वेरी ब्यूटीफुल. These examples of phrases, and these phrases will be used in sentences and then it give complete meanings. In the classroom, Sana is standing in the classroom. So इस सेंटेंस में in the classroom क्या होगा? फ्रेज होगा. अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल. देखें, अब हमने इसका सेंटेंस बनाया तभी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, अदरवाइज़ ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे या टेबल के अंदर, इसका मतलब कोई ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद. So it does not give complete meanings. Very beautiful, with my friend, at home, on the bus, a red flower. These are all examples of phrases. So you can see that these phrases, when we will use these phrases in sentence, they give complete meaning. The book is on the table. On the table is phrase. We met after school. Okay, it gives complete sentence in complete meanings in sentence. She lives near the park. वो पार्क के करीब रहती है. They walked with their teacher. So with their teacher, near the park, after school, on the table. These are all phrases. I hope so you will understand the complete sentence of phrases. And I will give you a worksheet that you will solve, and you will know you have understood the meaning of phrase. After understanding the meanings of phrase, you are able to identify phrases. These are all 10 sentences. ये तमाम sentences दिए हुए हैं यहाँ पे. इनको आपने क्या करना है? Underline the phrases in the following sentences. These are complete sentences, so you will underline only phrases. The cat is under the table. We will meet after school. You can also solve these phrases and you can answer me in comment box. Okay, if you have complete understanding of phrases, then support my video. Okay, Allah Hafiz.